guys, welcome back to my channel, The Beautiful Poser. I am Aditi and in today's video I will show you how to get this look in 5 minutes. So before we get into the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and let's get started. So before applying anything on my face, I wash it with a face wash and then I apply a moisturizer. So recently I got this moisturizer from Muji, it's a Japanese brand, I think so. So this is, so I'll show you how to do it. Dun -dun. Where is my mirror? Okay, I'm doing like this. This makeup is very quick. I generally do जब मुझे बहुत लेट हो रही होती है कहीं जाने के लिए, तो I do it like this, ऐसे हाथ से. उसके बाद I don't apply primer on daily basis, but yeah, apply कर लेती हूँ कभी कभार, कहीं अच्छी मुझे long day कहीं पे जाना हो. I am using my Fit Me foundation, my favorite. So I'll take it like this, not much, because it's summers and I don't like to apply more makeup on my face. So I use my hand as well, उससे बहुत जल्दी हो जाता है, like this. मुझे ऐसा लगता है कि योर हैंड्स आर द बेस्ट, यू नो, सबसे अच्छा मेकअप टूल यही है, इससे फास्ट कुछ भी नहीं है. थोड़ा सा गर्दन पे लगाऊंगी ताकि मेरे फेस का पूरा नेक का टोन मिले, अनइवन टोन ना लगे. इफ़ यू आर वेयरिंग अ टॉप लाइक दिस, ऑलवेज यूज अ फाउंडेशन, अदरवाइज यू नो अनइवन टोन के चक्कर में यू विल लुक डिफरेंट. So I am done with my foundation, so I have to conceal my face, so I'll be using this Maybelline Fit Me. So concealer, I don't have time, so मैं ऐसे generally ऐसे करती हूँ. And that's it. This is, I'm done with my concealer. लगा लिया मैंने. Now I'll use a face powder. गर्मी के टाइम में मैं जनरली ऐसा करती हूँ, that's it, ताकि पसीना ज़्यादा आए ना. Okay, so I'm done. I'll use a blush, eyeliner, lipstick, then so the next thing is eyeliner. I will be using this Maybelline Eye Studio Drama Gel. मैं इसकी जगह नायका का काजल भी यूज़ करती हूँ, विच इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग. आई यूज़ अ फेस पाउडर आँखों के ऊपर, इज जस्ट बिकॉज इनकी आँखें मेरी जैसी हैं. आँखें बंद करने के बाद क्या होता है मेरे साथ कि लाइनर आँख के ऊपर लग जाता है. ओके, सो यू कैन यूज़ अ फेस पाउडर और अ बेबी पाउडर और एनीथिंग. उससे आपका काजल जो होगा या लाइनर जो होगा वो ऊपर नहीं लगेगा. सो वो मैं यूज़ करके दिखाऊंगी. सो सी, हल्का सा अपने फिंगर्स पे लीजिए एंड देन स्प्रेड इट लाइक अ आई शेडो. एज यू आर डूइंग आई शेडो, आप इसे इस तरह से लगाइए. सो इससे क्या होगा, ये फैलेगा नहीं, अभी फैलेगा नहीं. So next thing is blush or lipstick. Blush, lipstick bhi. So I will be using Maybelline V Face contouring blush and highlighter. You can buy this. This is good. इसमें सारा कुछ है. थोड़ा सा blush, smile, smile. Next is lipstick, Lakme 925 in the shade Rose Touch.
This is one of my favorite. I'm using it from last, I think, more than 1.5 year. This is the best. ये लिपस्टिक मैं हमेशा लगाती हूँ. This lipstick is so good. इतना अच्छे से मॉइस्चराइज करती है आपके लिप्स को. ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मैट फिनिश देती है, और सो गुड. एंड इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है. आई जनरली बाय लिपस्टिक जिनका टेस्ट भी अच्छा हो, कॉज आई एम वेरी फूडी. आई लव फूड, तो उसके साथ में लिपस्टिक भी जनरली खा जाती हूँ मैं, तो टेस्ट तो चाहिए ही चाहिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो कौन कौन सी लिपस्टिक है मेरे पास, प्लीज़ कॉमेंट बिलो. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शोइंग यू माई लिपस्टिक्स. Alright guys, so this is the final look. As you can see, I have upgraded my look by wearing several jewelries. आप और भी heavy jewelries पहन सकते हो. You can wear colorful earrings as well. And one more thing guys, thank you for the suggestions and I really loved it. That's it for today guys, and don't forget to comment below आपको ये makeup tutorial कैसा लगा, my daily routine कैसी लगी, please comment करना. And please don't forget to like the video, share the video and subscribe to my channel always. Bye bye, see you soon. Thank you guys.